सामने वालों को पूरा का पूरा घर दिखता है. Want some privacy. क्या कर रही है? मैंने पहले क्यों ले लिया वो झूमर. Hey everyone, what's up and welcome back to my channel. Welcome back to a new video. We are finally redoing our living room. बहुत सारे parts होने वाले हैं. This is part 1 of that series, which I'm very excited for because बहुत time बाद हम लोग ने finally living room redo कर रहे हैं. It's been more than a year or 2 years since we have shifted to that area. और जैसे बिल्डर ने दिया हुआ था वैसे का वैसे ये कलर तक नहीं लगा है. So it definitely needs a lot of work. We are very excited for it. Before we get started with it, let's just quickly see how our living room looks right now. Let's take a look at the before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Right now we are headed to IKEA to get some furniture shopping done. We already made a list about कि क्या चाहिए हम लोगों को. We don't want to go over budget. It can be very daunting when it comes to IKEA. सब कुछ बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है. बहुत Pinteresty vibes है वहाँ का. So definitely make a list about what you need to get. Hopefully we'll get whatever we are aiming to get. So yeah, let's go to IKEA. नासिक अपने ये रोड से गए थे. ये रोड था? अपन डायरेक्ट बाइक से गए थे. हाँ. हम लोग नासिक गए थे वहाँ से. It was like hours and hours. बाइक राइड टाना नाशिक मारा था ना. Full on it, comfy seat and all that. Oh my God. सुबह feel like that. We are almost there. बर्ली वाले IKEA गई हूँ, but ये वाले जो नवी मुंबई वाला IKEA है यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है. ये बहुत ही बड़ा है बर्ली वाले IKEA से. तेरा तो फर्स्ट IKEA है ना? Like देखा ही नहीं. दिखाते ही नहीं है. कुछ नहीं. बाय. बब सीधा गया. टेबल है. देख रहा हूँ कैसे. सॉफ्ट है. फेरी लाइट्स चाहिए. No, not the fairy lights. Then? I want this bowl. Okay. Love it so. सबसे पहला अभी सोफा ये करते हैं. I think सोफा का बेड है. ये बहुत सही है ना. I really like ये. बट अभी सोफा फाइनलाइज करते हैं. अलग ही अलग कॉन्वर्सेशंस. ये कैसा लग रहा है टेबल? ये कलर वाइट बैकग्राउंड रहेगा है ना. उठ के दिखेगा ना. ये भी वाइट में अच्छा दिखेगा. ये भी अच्छा दिखेगा. वो कैसे कॉन्ट्रास्ट दिखेगा. हाँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ऊपर वाला. आई थिंक उसका लेदरिश मटेरियल है. ये है ना. यही है. ओह ये ज़्यादा सॉफ्ट है. ओह तो ये दिस थिंग थोड़ा भी कट गया ना तो हाँ वो तो है. इसका भी वो क्लॉथ इज बेटर.
I think ये let's पोंछने के लिए अच्छा है पर वो पोंछने हाँ तो ये क्लीन करने के लिए but then this is washable so one and the same ये भी उठा देते ना ये कैसा वो पैटर्न में उठाना है ऐसा वाला वो इसमें मिलता है सेम कलर मिलता है सेम कलर में इट्स मिलेगा? कॉल्ड फुट ये ना लाइक एल शेप आराम से बना सकते हैं ना foot उसको stool. वैसे करने का बट वैसा वो कलर में मिलना चाहिए फुट स्टूल ना खुल नहीं रहा बट ओपन अप FBI ओ इट्स क्या कर रही है काम खराब कर रही है सब जगह पे I will have something like this in future in my kitchen ओके को ऐसा कटलरी डिस्प्ले करना है बट अभी हम लोग लिविंग रूम मेकओवर कर रहे हैं किचन सोफा बुक हो गया अभी नेक्स्ट आई थिंक टीवी यूनिट देखते हैं क्या मिलता है मोस्टली तो टीवी यूनिट आई लव दीस लैम्प्स ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने क्यों ले लिया वो झूमर अगर वो नहीं रहता तो आई लव दिस काइंड ऑफ सो कूल ना लव इट एक एक्स्ट्रा ये सब भी है कैन जस्ट चेंज द कवर दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट IKEA 80,000 maybe it's the everything na adds up because of the material of the kapda not because of the sofa Sofa cushioning. comfort, हाँ. सबसे ज्यादा पैसा ये कपड़े का जाता है मेरे घर पे this is nice you can put all of these decorational pieces है ना यस ये और ये but then again I feel like इसका ये जो क्रैक बहुत जल्दी आएगा you think? है ना नाजुक लग रहा बहुत नाजुक लग रहा है काज ऑलरेडी इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं और तुम्हारे है ये बना के मिलेगा तुम्हारे घर पे वो भी एल्यूमिनियम वाले के पास से आराम से मिल जाएगा तुम्हारे घर पे नमूने भी बहुत आते हैं एग्जैक्टली जैसे तू ए मैं नहीं नमूना तू ही हो नमूना मैं क्या I सोफे like the nested look of this like you can separate it you can add it इकडेच काम काढते जगह सेव कर सकते हैं देन यू हैव टू डिफरेंट ये तो अलग रख सकते हैं क्या करना है वर्थ है नॉट वर्थ आई थिंक इन फ्यूचर वी विल गेट समथिंग इवन बेटर व्हिच वन ओके सेक्सी ब्रो ये छोटू वाला है उसका बच्चा but we will get the 3 one ओके यहाँ पर MX और वो सब आ जाएगा या फिर ऊपर अच्छा जा रहा है ना सोफा के साथ बहुत सही जा रहा है I love it ये तो पक्का आने वाला है but what do you think about that दैट इज अमेजिंग है ना वो I'm तो planning मस्त to है। get that as well से तुम लोग का ये तो एकदम बॉम्ब लगेगा है ना what do you think about this This is Now also they great put it up front मेरे I'm thinking about it like I see you I see that happening but nah I want something that I can open ऊपर and I can have food as well not only just do नाश्ता you know what I mean तो अपन को कस्टमाइज करके लेंगे बट सोफा आई थिंक यू हैव अ मिरर ऑलरेडी एग्जैक्टली कितना मिरर लोगे भाई मिरर वाला वो मेज होता है ना आई लव दिस This is look like romantic Bollywood scenes. Oh. That's the same. This is kind of looking like वो चाचा वाला जो सामने वाला चाचा का जो पर्दा है नहीं Chacha belongs to IKEA. चाचा is come over here only to shop. He's will catch him.
He'll find the. Hey, there are the rods. तुमको दो ये चाहिए? हाँ मेरे को दो ये डबल, बट बड़ा रॉड, राइट? ताकि एक शेयर कर्टन का रॉड हो और एक थिक ब्लैकआउट कर्टन का रॉड हो। अभी जो दोनों बहुत शेयर है, सामने वाला तो पूरा का पूरा मुझे दिखता है। Which I don't want some privacy. You see, एक शेयर कर्टन Yep, का yep. ये रहेगा, Yeah, I got and that. one blackout curtain का। Yes. वो आ गया है भाई, आ गया? जहाँ खड़ा है बाहर, बोलता है मेरे को बताओ जल्दी किधर आना है। हाँ उसको बोलना ओला पिकअप। अरे पहले तो चल तो उधर बिलिंग के बिलिंग करना पड़ेगा ना तब तक. इसके बाद अभी अपन वर्ली जाके भी कर सकते हैं। अभी इधर से इतना मस्त हो गया। Aesthetic. 38,000। वहाँ पे ट्रॉली आ जाएगा ना। पागल. ये तो पक्का गाड़ी में नहीं आता था, अच्छा ट्रक के लिए उसे। वैसे क्या इतना हैवी नहीं है, मैं तो ऐसे It is on a wheels, but you have to go to। कितनी बड़ी लिफ्ट है, ऐसा लग रहा है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, P1 ना? हाँ ऐसा लग रहा है कि अपना हॉल इतना ही बड़ा है। कितना बड़ा है लिफ्ट। ये तो पक्का गाड़ी में नहीं आता था, सोफा तो पक्का। चली जाएगा मत, उसको लग रहा है दबा कैसे चलती है. ओपन अप FBI. वेरी हैवी है, उठाने कैसे वाला है? So, हम लोगों ने ट्रक सर्विस बुक किया है, so we're gonna load everything in this truck. शॉपिंग हो गई है, नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर हाउस। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी है। वी हैव टू अनलोड द स्टफ दैट वी एक्चुअली गॉट। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है वो वापस हम लोग को वही ट्रक में लोड करके वी हैव टू टेक बैक टू अजिंक्यज नेटिव प्लेस। वहाँ पर वो सारी शिफ्टिंग होने वाली है। सो ये सब चीज़ें करनी है, प्लस कल हमारे कज़न का इंगेजमेंट है, सो विल बी स्टेइंग एट हिज नेटिव प्लेस और वो सब अटेंड करके देन वी गोना कम बैक। It's gonna be stressful. Let's do that. जिधर भी तो कुछ लगेगा पानी का बॉटल दिख रहा है आपको। Let's go. Bye IKEA. नवी मुंबई वाला, अभी अपने को और वर्ली वाला भी जाना है बाद में, थोड़े दिन बाद, to pick up other stuff, right? Yeah. आएगा तू? वो पार्ट में मैं नहीं रहूँगा. तू नहीं रहेगा? मेरे एग्जाम. ओह। जेम्स को भी लेके जाएंगे डालने के लिए उसको गाड़ी में। उसके वो तो पार्टनर चाहिए, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Real James X. अच्छा, that's your whole Instagram ID? हाँ, Real James. Not sex, हाँ, X. Real James and X बस. Real James and X. I am so tired right now. अभी जस्ट पहुंचे हैं, अराउंड 5 बज रहे हैं। बहुत ट्रैफिक मिला हम लोगों को। फाइनली वी हैव रीच्ड. Now we have to unload all of that stuff and again pack all the furniture that we need to take. Room is looking so empty. So यहाँ पर का जो सोफ़ा था और यहाँ पर का दोनों हम लोग ने भेज दिया है। ओके, ये भी हम लोग एक्चुअली मूव करने वाले थे, बट जो मैंने सिलेक्ट किया था उसका क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। सो दिस इज़ गोना स्टे एज ऑफ नाउ. विल थिंक अबाउट इट व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर. रेस्ट एवरीथिंग इज़ गोना स्टे. ये मैं सोच रही हूँ कि OLX पे भेज दूँ या फिर पता नहीं क्या करने वाले इसका हम लोग, बट दिस इज़ हियर राइट नाउ. अभी ये और ये भेज दिया है, और भी सामान है जो हमें भेजना है, बट विल मोस्ट प्रॉब्ली डू दैट बाय कार. सो वी हैव अ बिग टास्क ओवर हियर. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये लिफ्ट में आ नहीं रहा है, सो वी हैव टू ओपन इट
and take it manually. That's it for part 1 of our living room makeover series. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button and let me know in the comments down below what video do you want me to film next. Of course, there are multiple parts coming up really soon. So if you want to get notified, don't forget to hit the subscribe button and hit the bell notification to get notified whenever I upload a new video. And I'll see you guys in my next video. Bye! I had a dream, we were sipping whiskey neat. I used to floor the Bowery when I was high enough. Spider-Man's control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list.